morning, gentlemen. दोस्तों, I hope all of you are fine. I am also very happy. और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ about the global political and military situation. I think this is the most dangerous time in the 21st century through which we are passing. Three things have happened and are continuing. The first, which started last year, was the invasion by the Russians of Ukraine. I think that was inevitable. It was going to happen in any case. उसका कारण ये है कि Americans had left no option for the Russians except to fight. और उन्होंने सोचा था कि that we will be able to finish Russia. हम उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, हम उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, एंड वी विल सी कि उनकी कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, and Russia will collapse. Everything is not so simple and easy. Russia has not collapsed. That's another point we must bear in mind. Why? Because it has the largest reserves of oil and gas in the world. Russia can sustain a conflict, and it's the biggest country in the world. How did the Americans expect that Russia will collapse and sue peace? So the war is continuing, and Ukraine is at the end of the tether. Russia जीता नहीं है, I will say that. They have not won, but they haven't lost, and they haven't given up the territory which they have occupied in eastern Ukraine. एक और चीज़ हुई, एक और डेवलपमेंट हो गई, and that was the attack by the Hamas on Israel. उन्होंने तकरीबन 10,000 रॉकेट दाग दी इसराइल के ऊपर, which was a surprise, and almost about 1,500 Israelis died. It was an element of surprise in favor of Hamas. पर उसका रिएक्शन तो होना था, एंड इजराइल हैज़ लॉन्च्ड ए काउंटर ऑफेंसिव एंड दे आर नॉट गिविंग अप. अब ये जो बैटल स्टार्ट हुआ यूक्रेन में, अपना गाजा में, दिस द अमेरिकन नेवर एंटिसिपेटेड. अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है, हम इतना उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, दे कुड नेवर इमेजिन कि दिस वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट इन द मिडल ईस्ट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टाइड अप इन द वॉर इन यूक्रेन. अगर इनको पता होता कि मिडल ईस्ट में लड़ाई होगी, परहैप्स दे मे नॉट हैव फॉट द यूक्रेन वॉर. But now they are caught in both this. It's a pincer attack, because ये जो अटैक है, इसको lot of Muslim countries, Islamic countries, they have gone against Israel. और उनमें से एक कंट्री है द हुथीज, जो रूल करते हैं पोर्शन ऑफ यमान. दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इसराइल. और वॉर जो है अब रेड सी में निकल गई. अगर आप मैप देखेंगे, द हुथीज आर ऑक्युपाइंग अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन द रेड सी. And the net result is that all the ships which are passing through that are vulnerable to Houthi attacks. And सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका आएगा ऑन इजिप्ट, जिसके थ्रू एक सुएज कैनाल निकलता है. द सुएज कैनाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड. और 30% ऑफ वर्ल्ड शिपिंग वहाँ से निकलती है, एंड इज द शॉर्टेस्ट रूट यूरोप से एशिया, जापान, चाइना का. पर अब जब हुथीज ने कुछ शिपों को ऊपर हमला कर दिया है, अटैक कर दिया, तो जो शिपिंग कंपनी, दे आर वेरी स्केर्ड. तो वो चाहते हैं कि हम अराउंड द केप ऑफ गुड होप जाएंगे, तो उनका जो कॉस्ट है बढ़ जाएगा शिपिंग का, और नंबर 2, जो रेवेन्यू इजिप्ट को मिलने वाला है वो ख़त्म हो जाएगा. इट विल गो डाउन. सो जेंटलमैन, ये सिचुएशन इज़ वेरी वेरी ट्रिकी. और हुथीज जो हैं, दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इजराइल. उन्होंने कुछ मिसाइल भी दागी इजराइल के ऊपर, बट सऊदी अरेबियन ने उनको शूट डाउन कर दिया. सो द स्टेटस कू चल रहा है. और हमास जो है बहुत हार्ड प्रेस्ड है. उनके एक लीडर जो हैं, वो उनको असैसिनेट कर दिया बाय ड्रोन अटैक, जो नंबर 2 मैन थे. एंड द इजराइलीज आर लुकिंग फॉर मिस्टर सिनवार, हु इज़ द मेन हेड. दे मे कैप्चर हिम, मे नॉट, आई डोंट नो. पर मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही वहाँ गाज़ा में, और अमेरिकन अब 2 जगह इन्वॉल्व हो गए. अब एक तीसरी जगह भी इन्वॉल्वमेंट आने वाली है वेरी शॉर्टली, और वो है इराक और ईरान. ईरान हैज़ डिक्लेयर्ड अमेरिका एज इट्स एनिमी, और इराक में देयर हैव बीन अटैक्स ऑन अमेरिकन बेसिस. सो अमेरिकन इराक में क्यों हैं इज बीट्स माई इमेजिनेशन, बिकॉज अमेरिका ने बहुत बंगलिंग की है एज फार एज इराक इज़ कंसर्न. उन्होंने वहाँ जो एक आदमी था जो डिक्टेटर ज़रूर था, बट ही वॉज कंट्रोलिंग इराक, एंड ही वॉज अगेंस्ट द ISI,
एंड अल-कायदा, और उसी आदमी को जो could have been a potential American ally, they got him done by a kangaroo trial, kangaroo trial किया उसका, and उसको फांसी लटका दिया. I think John Bush was very happy and he was cheering it, and he's paying a terrible, terrible price for the Americans now. और अभी चाइना भी है क्रिएटिंग डेंजर इन द ईस्ट. चाइना हैज़ ए प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना नोज कि अगर 5-10 साल अगर उन्होंने ताइवान को इन्वेड नहीं किया, दे विल नेवर बी एबल टू टेक ताइवान. एंड एट द मोमेंट दे डोंट हैव द एम्फीबियस कैपेबिलिटी. सो चाइना भी इज हैचिंग इट्स बेट्स कि हम अटैक करें नहीं करें, बिकॉज रशिया का उन्होंने बैटल देख लिया कि रशियंस कुड नॉट विन इमीडिएटली. And China, which is separated from by a ocean of over 100 miles, is not going to be easy for them to ferry their troops across to Taiwan and fight there. I do not know Americans क्या करेंगे. हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि an attack on Taiwan will be considered as an attack on America. पर सिचुएशन इज ग्रिम. और नॉर्थ कोरिया ने आई थिंक 3-4 दिन पहले एक बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया था कुछ आइलैंड्स जो है साउथ कोरिया के. सो यू कैन वेल सी द ग्लोबल सिचुएशन इज़ प्रीटी बैड. एंड अमेरिका वो पावर नहीं रहा जो पुरानी पावर अमेरिका की थी व्हेन दे वर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड. एक टाइम था जब अमेरिकन वियतनाम में ज़रूर हारे थे, बट दे रिकवर्ड वेरी फास्ट एंड दे स्टिल हैड देयर बेसेस एंड एवरीथिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और वो भी बेसेस भी अब इनके ख़त्म हो गए तकरीबन. इनके जो मिलिट्री पैक्ट्स हैं वो तो डेड हो गए, पेपर पे ही हैं. अब दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द सिनेरियो. अब इंडिविजुअल पैक्ट्स बनाए हुए. इनका एक अमेरिकन प्लान था टू रोप इंडिया इन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना. दे फेल्ड देयर बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है इज़ वेरी श्रूड मैन, एंड ही हैज़ मेड वेरी क्लियर टू अमेरिकन्स कि मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा चाइना के साथ. आई एम नॉट गोइंग टू फाइट योर वॉर विद चाइना. मेरे ख्याल में चाइना इज़ वेरी अनहैप्पी विद इंडिया, नो डाउट अबाउट इट. पर चाइना को ट्रेड भी चाहिए इंडिया के साथ, और 100 आई थिंक 30 या 40 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया और चाइना की. अगर वो ट्रेड ख़त्म हो जाए, चाइना इज़ गोइंग टू इकोनॉमिकली सफ़र वेरी बैडली. और नॉट ओनली दैट, इन्होंने इतने पैसे पाकिस्तान में वेस्ट कर दिए हैं, 60-70 बिलियन डॉलर्स. और ये अगर ट्रेड भी बंद हो जाए तो चाइना की इकॉनमी विल बी ग्रेटली डैमेज्ड. बट एट द सेम टाइम चाइनीज़ डू नॉट नो अब क्या करना क्या है as far as Taiwan is concerned. या इन्वेड करें नहीं करें, अमेरिकन्स आर ऑल्सो गेटिंग वरीड. सो जेंटलमैन, द होल वर्ल्ड देखिए कितने हॉट स्पॉट्स चल रहे हैं. ईरान जो है इज़ गोइंग अहेड विद न्यूक्लियर रिसर्च, एंड पॉसिबिलिटी है कि उनके पास एक डिवाइस है. दे हैव बीन एबल टू परफेक्ट इट बट नॉट टेस्टेड इट. सिचुएशन एज फार एज ईरान इज़ कंसर्न्ड इज़ वेरी बैड. ईरान तो बहुत टाइम से, I think for the last almost 45 years, has been against America and has always called it the Great Satan. That was because the Americans supported Shah of Iran, who was a despot. He did nothing good for the country. At least he could have done something like Kemal Atatürk or something. He did nothing. And net result is he had to flee the country. उसमें इतने भी गट्स नहीं थे कि वहाँ रुक जाता और आर्मी के सपोर्ट के साथ कुछ करता. बट द आर्मी ऑल्सो बिट्रेड हिम एंड ही रैन अवे. अब जेंटलमैन, यूक्रेन वॉर का क्या होगा आगे? मेरी जो राय है, आई थिंक अमेरिका इज गोइंग टू स्टॉप द टैप ऑफ वेपनरी टू यूक्रेन. ये नॉट बिकॉज ऑफ दे विश इट, बट बिकॉज ऑफ नेसेसिटी. कि कब तक अमेरिका ये वेपन्स देता रहेगा टू यूक्रेन, बिकॉज यूक्रेन नॉट विनिंग. और वेपन उनको जितनी मर्जी देता हो वहीं कि वहीं दे आर गोइंग इन टू ए एबिस, जैसे कहते हैं पंजाबी में खूह में डाल दिया. दे आर ऑल गोइंग इन टू द वेल. नथिंग इज कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर नॉट विनिंग. द यूक्रेनियन, दे हैड लॉन्च सम ऑफेंसिव विच फेल्ड, एंड द रशियंस आर रेनिंग हेल ऑन यूक्रेन. सो अमेरिकन्स either they commit their own troops there, and if they do commit also they will lose because they lost in Afghanistan, they lost in Iraq, they lost in वियतनाम. व्हेन आई से लॉस्ट इन इराक, वो लॉस्ट किया. हालांकि उन्होंने इराक को ऑक्यूपाई कर लिया था और एक फ्रेंडली रेजिम को लगा दिया था. उन्होंने सोचा हमारी चांदी है, बट डिडंट वर्क आउट दैट वे. द इरानियन पीपल विच आर मोस्टली शिया हैव साइडेड विद ईरान, एंड इरानियन बैक्ड मिलिशियाज आर मूविंग अराउंड इन इराक, and they sometimes attack the American bases there.
सो सिचुएशन इज़ वेरी बैड. और मैं एक बात बताता हूँ, कोई ऐसा अमेरिकन नहीं है जिसकी हिम्मत है कि बगदाद में वो अकेला घूम ले. There is no American who has the courage to walk alone in Baghdad because he cannot do it. He'll get shot, killed, kidnapped, assassinated, anything can happen. Then there is the problem with the Houthis. The Houthis are the proxy for Iran. उनको weapons मिल रहे हैं वहाँ से, moral support, political support, and they are at a vantage point and they obey the orders of Iran. And Iran can also create a lot of problem because a lot of oil from Kuwait and Bahrain and Iraq goes through the Gulf. And at some point, the Iranians can easily choke it. And America will need a lot of naval force to see that this doesn't happen. They have also to keep the Red Sea going. So the whole of the Middle East is in a ferment. I don't know what's the American think tank, but they're really planning anything or no. And what are they thinking? I have no really idea. But as a historian, I can tell you, I was an American general. I would advise President Biden to tone down. Forget about the Ukraine conflict. Have a detente with Russia. That I would tell him that. And I also tell him to see that there's a solution in the Gaza Strip. That is, Israel has had its revenge. They have killed about 20,000 Palestinians. But it's about time they called it off. You know, there's a book by Rumor Gordon, Thus Far and No Further. अरे भाई हो गया अभी, you have done it. You won the war. You can have a peace treaty and we can have things like putting some restrictions on Hamas and all that. But मुझे लगता है ऐसे नहीं होने वाला है. And ये war to the end होगा जब तक हमास का खात्मा ना हो जाए. Let us see होता है या नहीं. And thirdly, if I were the American general, I would tell him to be more scared and wary of China. That is the point. But unfortunately, America में right from the time of President Clinton, ये चाइना के साथ भाईबंदी करते रहे हैं. I can tell you, China would never have had the courage to have occupied the entire South China Sea अगर अमेरिका ने उनको एक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया होता. अगर आपको याद हो, प्रेसिडेंट दुतार्ते तो थे, हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस, उन्होंने कहा था कि इट इज़ अमेरिका विच हैज़ अलाउड चाइना टू कम इन द एंड ऑक्यूपाई द साउथ चाइना सी. इफ अमेरिकन्स वर सीरियस, they would have sent 5 aircraft carriers there and the Chinese would never have dared. But they didn't do it. Now they have de facto control over the entire South China Sea and they are troubling the Philippines, North Vietnam, everybody which form the littoral states of that region. So gentlemen, after that we had George Bush and his ideas were not clear and he paid a terrible price in Iraq. For nothing, he got Hussein killed by a kangaroo trial, and then he also lost in Afghanistan. I think the basic defeat came from him because after he had overthrown the Taliban government, he lost steam, turned his attention to Iraq. Nobody can explain why he did it. He was talking about WMD, weapons of mass destruction. अरे भाई वहाँ कोई weapons of mass destruction थी नहीं. And then now the problem is there in the Far East. जापान उनका एलाई है, पर जापान इज नो मिलिट्री पावर. जापान की एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है विच हैज नॉट बीन चेंज येट. और जापानीज आर्मी वो आर्मी नहीं रही जो लास्ट वॉर में लड़ी थी. एंड यू नो उन्होंने नॉर्थ चाइना और साउथ ईस्ट एशिया को दे हैड ओवररन एंड हैड रीच द गेट्स ऑफ इंडिया. दैट आर्मी इज नो लॉन्गर इन देयर. और जापानीज अब लड़ने के लिए भी उनको प्रॉब्लम आएगी बिकॉज उनकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी चल रहा है. And aging population, a young population not there, and I don't think China is in a position to fight any war. Sorry, Japan is in a position to fight any war. So, gentlemen, Japan is a liability as a matter of fact as far as America is concerned. And Taiwan को कैसे America defend करेगा? Because if the Americans have to bother, they should more bother about China than about Russia and the Middle East. मिडल ईस्ट तो खैर अब अमेरिकन पॉलिसी ऐसी है कि इन्होंने टाई अप कर लिया अपने आप को इसराइल के साथ. And Israelis के legitimate grievances हैं, I agree, and that has to be decided by a conference. Already Donald Trump जो थे, he was on the right path.
उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड बनाया और 3-4 मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लिया. इट वॉज अ ग्रेट फीट. एंड अगर डोनाल्ड ट्रंप को सेकेंड टर्म मिल जाता तो ऑल दिस इम्ब्रोग्लियो नहीं होता. आई एम वेरी श्योर he would have looked for a solution and got something done. अब इसमें जो टैक्टिक्स है वो डिसाइफर करना है कि व्हाट इज ईरान गोइंग टू डू. टर्की भी बहुत इधर उधर बोलता है, बट आई डोंट थिंक द टर्क्स हैव गॉट दैट पावर. द ओटोमन एम्पायर खत्म हो गई है एंड एर्डोगान नोज की ओटोमन एम्पायर तो खत्म हो गई है, एंड ऑफ इट. उस टाइम तो ओटोमन एम्पायर जो था ये अरब्स को भी रूल करते थे. मक्का मदीना भी अंडर देयर कंट्रोल था. इजिप्ट वो कंट्रोल करते थे. एवरीथिंग वाज विद देम. दैट्स ऑल ओवर एंड दे कैन नेवर गेट बैक. द अरब्स आर नॉट फॉरगॉटन द रूल ऑफ द टर्क्स. एंड अगर आपको याद हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दैट फेमस लॉरेंस ऑफ अरेबिया लेड ए अरब फोर्स टू फाइट द टर्क्स. एक पिक्चर भी है, इट्स वर्थ सीइंग इट. तो जेंटलमैन, इस सिचुएशन में ईरान इज द एनिग्मा. इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय रशिया. दैट इज अनदर वेरी बिग पॉइंट. एंड चाइना. एंड रशिया को एंटेगनाइज करना हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स ऑफ द अमेरिकन्स. मेरे हिसाब से रशिया एक एलाई होता है अमेरिकन्स का. और पुतिन जो था, बट डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आया, he wanted a settlement with the Americans, you know, a relationship that should be settled, defined. But there was so much of pressure from the Democrats that they could not have that peace with the Russians, would not allow. Donald Trump made all sorts of false accusations that he's a Russian spy, on that he was having some golden showers in Moscow and all. I mean, all absurd things they were talking, whether true or no, but to bring them out at that time was irrelevant basically to the uh, world of politics and global strategy. Donald Trump had also, you know, kept the North Koreans in check, but he had realized that there were two countries which he had to deal with, and that was China and Pakistan. He had clearly put it clear that Pakistan believes only in perfidy and lies. It is hunting with the hound as well as running with the hare. So ये एक पहला प्रेसिडेंट था जिसने ये रिकग्नाइज किया. और जो बाइडन जो है, अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ लॉस्ट. और बाइडन इज ट्राइंग दैट इंडिया शुड बिकम द अमेरिकन प्रॉक्सी टू फाइट अगेंस्ट चाइना. तो ऐसा नहीं होगा. मोदी इज नॉट गोइंग टू डू इट. एंड वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं. गुस्सा दिखाने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि आई विल नॉट कम फॉर दी रिपब्लिक डे परेड. भाई फेयर इनफ, मत आइए, आराम करिए. मोदी हैज़ गुड इनफ, इज एस्ट्यूट. एंड मैक्रोन द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज नाउ गोइंग टू अटेंड दी रिपब्लिक डे परेड. जेंटलमैन, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है एट द मोमेंट. एज यू से, यूक्रेन वॉर चल रहा है, गाजा वॉर चल रहा है, हूथीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, इराक में प्रॉब्लम है, ईरान इज बेलिग्रेंट, चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल बिकॉज उनको पता है टाइम इज रनिंग आउट. अभी नाउ और नेवर ये बात है. अगर ताइवान को अब नहीं ले पाए तो वो कभी नहीं ले पाएंगे. एंड सेकेंडली, चाइना इज ऑल्सो वरीड. इंडिया इज अ राइजिंग पावर एंड अमेरिकन आर वरीड. और अमेरिका का पावर वो नहीं रहा. दैट ओमनीपोटेंट पावर जो थी वो नहीं रही, बेसिकली बिकॉज द अमेरिकन्स डू नॉट हैव द मैन पावर टू फाइट. जिनके में उनके एलाइज हैं वेस्टर्न यूरोप के, उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, वो दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व. इनफैक्ट लॉट ऑफ यूरोपियन एलाइज जो हैं वो अब यूक्रेन में भी नहीं लड़ना चाहते. दे से भाई अब बहुत हो गया, वी डोंट वांट टू फाइट इन यूक्रेन. एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट, आई थिंक, इज एट द एंड ऑफ द टीदर. ही नोज. एंड अगर कोई एस्ट्यूट प्रेसिडेंट आएगा, बाइडन जाएगा, इट इज इम्पॉर्टेंट ही गोज फ्रॉम दिस वर्ल्ड rather from the American presidentship, and whoever comes can have a detente with Russia, because Russia is a natural ally of the West, and their alliance with China is unnatural. अब भूलिए मत कि 69-70 में चाइनीज़ और अमेरिकन आर्मीज में बहुत बड़े क्लैशेस हुए और बहुत सारे चाइनीज़ मर गए उन क्लैशेस में. बॉर्डर प्रॉब्लम वॉज एक्यूट. And China would like to dominate Siberia. China Siberia को देख रहा है as liberalism, you know, more space for them. And Russia knows that Chinese population could overflood the entire Siberia,
and Russia would become a non-entity. So Russia is maintaining relationship with India because of that. They don't want this to happen. Gentlemen, it's a complex situation, but there is always a silver lining to the crowd. We will see this year क्या होता है. The two major elections coming up. There is an election in India, and if Modi comes back to power, it will be good for the world. And there is an election in America, and if Biden loses, it will again be very good. And let's see who comes back to power, because anything can happen in America. America is not a democracy. When I say that, they can pick up any rule somewhere, dig it out and debar Donald Trump from contesting the election. And then you'll have a non-entity, and that will be the obituary of the American power and state. Let's wait and see what happens. In the meanwhile, Israel, if it has to win the war, has to finish it fast. It can't linger around for months together. It's a bit of surprise to me that the Gaza, which is just about 12 by 30 miles, has not yet been sanitized by the Israelis. The Russians have also not succeeded in Ukraine, but I'm sure that if the Americans stop supplying weapons there, Ukraine will collapse. America is the central piece in all these conflicts around the world. And America must focus basically on China, which is the biggest danger at the moment as far as the Americans are concerned, and even the world in general is concerned. America, China has got a border problem with every country, right from Japan, Philippines, North Korea, every country. And it's a big power, and the other countries are relying on America to help them, but America doesn't seem to be serious as far as China is concerned. They're still looking for ways and means they can shake hands with the Chinese. And we have a sad spectacle of the news which has come. How far it's true, I don't know. That Hunter Biden has been taking, large amounts of money from dollars from the Chinese. That's treason. Well, I don't know how the Americans feel about it. They have got some inquiries going on, but they continue. And they can only take stands against small timers like Pannu, support him, and try to think that he's going to be their supporter. I don't think he's going to do anything. Pannu is a rat, and probably he'll just run away. The British Empire is over. I think Rishi Sunak should realize it, and just thinking that he's going to get back the glory of the days when the British Navy in 3 minutes won the battle in Janjigar is not something that happens every day, because every day is not Sunday. Well, gentlemen, I think I'll close now. मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Hot spots of the world are there. बहुत अच्छी बात है that we have got a very sagacious leader in Narendra Modi, and also we have a very wise leader, I think, leading Saudi Arabia, and he is Salman. I admire him. He's taking Saudi Arabia forward. At the same time, he knows how to go about the situation, and he also knows that if these terrorist organizations like Hamas all come back, there'll be a threat to the Saudi monarchy. So let's wait and see what happens, gentlemen. And do subscribe to my channel, share it with your friends, come back for more. In the meanwhile, I'll close now, and I'll request you all, take care of yourself, and good luck.